शहर में ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोपियों ने पिता की रिटायरमेंट राशि और परिवार की जमा पूंजी मिलाकर करीब 60 लाख रुपए हड़प लिए। यह मामला तिवारी नगर भिलगांव इलाके से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसके परिचित मित्र विपिन वायर ने उसकी पहचान आरोपी प्रखर शिशिर किशोर तिवारी और उसकी मां नीता शिशिर किशोर तिवारी से करवाई थी। विपिन ने दावा किया था कि दोनों प्लॉटिंग और निवेश का काम करते हैं। इसके बाद प्रखर और नीता तिवारी ने शिकायतकर्ता और उसके पिता को ये भी विश्वास दिलाया कि तिवारी नगर भिलगांव में उनके नाम पर प्लॉट मौजूद है। उन्होंने 7/12 उतारा जमीन का दस्तावेज दिखाते हुए निवेश पर कुछ ही दिनों में दुगना पैसा लौटाने का लालच दिया। फिरियादी के पिता ने सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त राशि और अन्य बचत मिलाकर आरोपी के बैंक खाते में 2 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक ट्रांसफर किए। इसके अलावा मित्र रिजवान खान और अभी ईश्वर पारदी के साथ मिलकर 34,50,000 रुपए नगद भी सौंपे गए। कुछ समय बाद शिकायतकर्ता को पता चला कि प्रखर तिवारी और नीता तिवारी ठगी करने वाले हैं। जब उसने अपनी रकम वापस मांगने की कोशिश की तो आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ नागपुर समेत महाराष्ट्र के अन्य कई स्थानों पर भी आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस का मानना है कि इस ठगी प्रकरण में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। यामध्ये पोलीस ठाणे लकडगंज अंतर्गत अपराध क्रमांक 264/25 अंतर्गत एक गुन्हा दाखल झालेला आहे। संबंधित फिर्यादी यशवंत गोविंदराव वाडेबसमे याने दिलेली असून यामध्ये आरोपी 2 आहेत। यामध्ये प्रखर शिशिर किशोर तिवारी व नीता शिशिर किशोर तिवारी राहणार भिलगाव या ठिकाणचे हे संबंधित आरोपी आहेत। दोन्ही या आरोपींनी लेआउटच्या नावाखाली बऱ्याच लोकांची फसवणूक केलेली आहे। तसेच गाड्यांचा देखील यांचा व्यवसाय आहे। लोकांना गाडी खरेदी करणे, त्याचे कागदपत्र खोटे बनवणे व त्याची विक्री करणे अशा प्रकारचे देखील यांनी व्यवहार केलेले आहेत। यामध्ये संबंधित आरोपी नागपूरमधील अनेक पोलीस स्टेशन जसे की जरीपटका, गिट्टी कदान, 5 पावली, लकडगंज यामध्ये 2022 पासून संबंधित आरोपी पाहिजे आहे। तसेच महाराष्ट्रातील बीड, अंबेजोगाई, मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, बेंगलोर व कर्नाटका या ठिकाणी देखील यांनी फ्रॉड केल्याचे दिसत आहे। संबंधित तपास हा आता चालू केलेला आहे। सदरचा आरोपी हा 2022 पासून फरार आहे। यामध्ये आम्ही संबंधित आरोपीचे लोकेशन 1 वर्ष झालं याच्या मागावर होतो। संबंधित आरोपी हा जयपूर राज्य राजस्थान या ठिकाणी लपून बसलेला आम्हाला याचे लोकेशन मिळाले। टेक्निकल मुद्द्याच्या आधारे याचा शोध घेतला व आम्हाला संबंधित आरोपी हा मिळून आलेला आहे। त्याचा PCR आम्हाला दिनांक 24/9/2025 पर्यंत मिळालेला आहे। संबंधित पुढील तपासात चालू आहे। संबंधित आरोपी याने खूप मोठा फ्रॉड केलेला आहे। आजपर्यंत त्याने बऱ्याच लोकांना फसवलेला आहे। त्याच्याकडून काही नावे देखील समोर आलेली आहेत। यामध्ये मेन नाव आरोपीने जे नाव घेतलेले आहेत त्यामध्ये 4 ते 5 व्यक्तींची त्याने नाव घेतलेली आहेत। त्यामध्ये काही बिल्डर लॉबीतील लोक आहेत, तर काही सरपंच देखील आहेत। मोठमोठ्या पदावर असणारे लोक देखील यामध्ये सामील आहेत। त्या दृष्टीने आम्ही तपास करत आहे। संबंधित गुन्ह्याचा तपास हा आता चालू आहे। यामध्ये आरोपी वाढण्याची शक्यता आहे। त्या दृष्टीने आम्ही तपास करत आहे। संबंधित तपास हा आम्ही आमचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हेमंत चांदेवार, पोलीस निरीक्षक गुन्हे साईनाथ रामोड, ACP श्वेता खाडे मॅडम, DCP राहुल मदने सर यांच्या नेतृत्वाखाली करत आहे। INBCN न्यूज के लिए अखिलेश के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।